Hello everyone, welcome to Math EduTop. Then the exercise 1.2, the question number 8 we solve here. In last video already we have solved the question number 1 to 7. Then here we solve the question number 8. Then differentiate the following with respect to x. The derivative of inverse composite function, we have given sine inverse of 4 sin x plus 5 cos x divided by square root of 41. Then here if you observe the given example, the outside term is sine inverse and inside we are given the some constant values into sine term, constant values into cos term. Then in last example, that is it, question number 7, we have solved the example depending on inverse function. At that time, the suppose sine inverse function is outside, then we simplify this inside function also in terms of sine, and then we use sine inverse into sine theta is equal to theta, that is y is equal to this one, and then after that we differentiate, we get the value of dy by dx. That is whatever this term is present outside, if it is sine inverse, then we simplify inside term also in sine. If outside term is tan inverse, then you simplify inside term in tan. मतलब outside की term tan theta tan inverse है तो inside भी हम tan simplify करेंगे. So और if outside term is cot inverse, then inside term also we simplify in terms of cot के term में simplify करेंगे. Such that cot inverse into cot is identity. Okay. Then here also the outside term क्या है, sin inverse है. तो हम try to simplify this inside term in terms of sin. Okay. हम sin के term में लाने की कोशिश करेंगे such that we use the result sin inverse into sin is equal to identity, or sin inverse into sin theta is equal to remain is inside term, that is theta. Okay. Then for that we denote the given value as y is equal to this, y is equal to sin inverse 4 sin x. Okay. Then we separate out this constant term and sin and cos term. Then 4 upon square root of 41 sin x, 5 upon square root of 40 and cos x. Then is it is possible that is write the inside term as an expansion of some sine formula. Okay, that is we know the formula of sine a plus b, that is we know the formula of sine a plus b. Okay, sine a plus b का formula क्या है, sine a cos b plus cos a sin b. But out of this which value we have given here, that is here sin x is constant and here sin x is present, here cos x is present, and here some constant value is given. मतलब sin x का कोफिशिएंट क्या होता है, cos b होता है. ठीक है, that is here a and b we can use different coefficient, we can take any other terms also, either x alpha. Okay, here we are take sin a plus b. तो sin a मतलब this one and cos b मतलब this one, 4 by square root of 41. Here also cos x मतलब this cos a and sin b मतलब this 5 upon square root of 41. Okay, that is if we write the same formula in terms of x plus alpha. Okay, this as we simplify this sin into cos form, that is sin term is given, constant term is must be cos, then cos term is given, constant term must be sin. Okay, then we are writing proper way. Then suppose we denote this as the cos alpha value and this as sin alpha value. ठीक है, then cos alpha value and this as sin alpha value. तो क्या मिलेगा, if we denote this as cos alpha and this as sin alpha, तो expansion क्या होगा, this as sin x into cos alpha, मतलब cos alpha means this value, then cos x into sin alpha, and this is the expansion of a. किसका expansion है, sin a plus b क्या होता है, sin a cos b cos a sin b. तो sin x plus alpha, sin x cos alpha, same thing cos x sin alpha. तो ये किसका expansion होगा, x plus alpha sin x plus alpha, that is sin a cos b cos a sin b. किसका है, sin a plus b का है, तो ये किसका होगा, sin x plus alpha. मतलब this inside term we write in terms of sin. How to write, sin x plus alpha. Okay, this has sin x plus alpha is this one expansion. Then we get this inside term as sin inverse sin of x plus alpha. Then this sin inverse and sin identity remain is x plus alpha. Then here we find the value of alpha. What is alpha? Okay, then let we find alpha. Then how to find alpha, that is tan alpha is equal to, what is tan alpha, the ratio of sin alpha and cos alpha. We have known the value of sin alpha and cos value alpha. क्या है, sin alpha की value 5 by root of 41 and cos alpha की क्या है
4/√41. Okay, then if you take the ratio, then you get tan alpha. क्या मिलेगा? This √41 get cancel and remain is 5/4. मतलब tan alpha is 5/4. तो अल्फा क्या आएगा? tan inverse 5/4 मिलेगा. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मिली. दिस एज आइडेंटिटी. y इज इक्वल टू क्या है? सिंप्लीफाइड टर्म x प्लस अल्फा. ओके, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस अल्फा. इफ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड हियर वी सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा. क्या है? tan इनवर्स 5/4. विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 1. एंड दिस tan इनवर्स 5/4 इज अ कांस्टेंट टर्म, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है? 0 है. तो dy/dx क्या मिला? 1. देन द वैल्यू ऑफ dy/dx इज 1. ओके, दैट इज हियर इफ outside term is in terms of sine inverse and inside term we are given the combination of sine, cos and some constant term, then we try to write this is the expansion of sine x plus alpha form. Okay, that is constant term, we denote this as cos term and this as sine term, such that we write this as the expansion of sine x plus alpha. Cos inverse √3 cos x minus sin x upon 2. Here in the last one example, middle is plus sign, then we have used the formula sin a plus b. Okay, then here in outside term is cos inverse, then inside term क्या चाहिए? In terms of cos. Okay, we have two options, either we have to use the formula of cos a plus b or cos a minus b. Okay, but middle sign is, what is middle sign? Minus 10. then we have to use this formula cos a plus b. क्या होता है cos a plus b का formula? cos a plus b expansion is cos a cos b minus sin a sin b. Okay, then we have to use this expansion. Then simplify this constant term separately and this cos x sin x term separately. Okay, then divide किया 2 से तो √3/2 cos x minus 1/2 into sin x आएगा. ठीक है, तो cos a plus b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b minus sin a sin b. तो ये क्या? cos term is constant cos x. Okay, then next is √3/2. मतलब here one term either cos a or cos b, we have to consider √3/2. Okay, and second term cos x either cos a or cos b. Okay, we consider first term as cos a and here also 1/2 as sin a. Okay, then we consider this as cos a and this as sin a. cos a मतलब √3/2, sin a मतलब 1/2, or either we can use the formula of cos x plus alpha. Okay, that is here x means this x and alpha means this constant term. Okay, then either we can use the formula of cos x plus alpha. Here this constant term we didn't, this as suppose cos alpha as √3/2 and sin alpha as suppose 1/2 time. Okay, then if we denote this as cos alpha as √3/2 and sin alpha as 1/2, तो cos alpha plus x का expansion क्या होता है? cos alpha cos x minus sin alpha sin x. Okay, middle is plus sign, then here is minus, and if here is minus, then here is plus. But in the given example, middle is minus sign, then we have to use the expansion cos alpha plus x का. Then cos inverse cos alpha cos x minus sin alpha sin x. Okay, then this is the cos alpha plus x, because cos alpha की वैल्यू क्या है? √3/2, sin alpha की क्या है? 1/2 है. तो in place of √3/2 क्या मिलेगा? cos alpha, and in place of 1/2 क्या मिलेगा? sin alpha. तो एक इसका एक्सपांशन है cos alpha plus x का एक्सपांशन. Okay, then this is the expansion of cos alpha plus x. then क्या मिला? y is equal to cos inverse cos alpha plus x. तो ये क्या मिलेगा? cos inverse into cos identity. तो remaining is only alpha plus x. Okay, then we get this as alpha plus x. Then here we find the value of alpha. तो alpha कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan alpha is equal to sin alpha from cos alpha. sin alpha 1/2, cos alpha क्या है? √3/2. using this we get tan alpha is 1/√3. तो from that tan alpha is 1/√3 तो alpha क्या मिलेगा? tan inverse 1/√3. then y is equal to क्या है? cos inverse cos alpha plus x. तो cos inverse into cos is identity. तो क्या है? रिमेनिंग x plus alpha. यहाँ पे alpha की वैल्यू पुट के लिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट की tan इनवर्स 1/√3. तो y is equal to x plus tan इनवर्स 1/√3. तो फाइनली वी डिफरेंशिएट दिस. देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? डेरिवेटिव dy/dx एंड x का 1 ये क्या है? कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. देन व्हाट इज dy/dx इज इक्वल टू 1. साइन इनवर्स ऑफ cos
root x plus sin root x divided by root 2. Then same thing, separate out the term. Here outside is sin inverse, inside क्या चाहिए, sin चाहिए. ठीक है, तो we have to use the formula of sin. Middle is plus sin, मतलब sin a plus b का formula use करना है. ठीक है, then we try to simplify this term in the form of sin a plus b. ठीक है, then separate out this term. Y is equal to, denote the given example as y. Then sin inverse 1 upon root 2 cos plus 1 upon root 2 sin. Okay, then we don't denote this as, suppose sin a plus b का formula क्या है, sin a cos b plus cos a sin b. Okay, or either you can use in terms of alpha and x, because this has given in terms of x. तो sin alpha plus x का formula क्या होता है, sin alpha cos x plus cos alpha sin x. ठीक है, तो sin की टर्म here cos की टर्म पता है, cos, then in place of x that is square root x. Okay, we keep in mind the sin x की जगह, sin x की जगह क्या है, sin रूट x है. तो a 1 अपॉन रूट x किसकी वैल्यू होगी, sin cos अल्फा की. एंड a 1 अपॉन रूट x किसकी, a 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होगी, cos अल्फा की. यानी ये 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होगी, sin अल्फा की. ठीक है, तो sin अल्फा इज 1 अपॉन रूट 2, cos अल्फा इज 1 अपॉन रूट 2. तो इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर sin अल्फा यार cos अल्फा, तो इसका एक्सपांशन होगा. therefore sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 मतलब sin अल्फा, एंड दिस cos रूट x as it is. this 1 अपॉन रूट 2 मीन्स cos अल्फा, दिस इज as it is. तो एक इसका एक्सपांशन है sin अल्फा प्लस रूट x का. ठीक है, तो sin इनवर्स दिस इज द एक्सपांशन ऑफ sin अल्फा प्लस रूट x. तो इन दैट वी हैव टू फाइंड द अल्फा. तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय टेकिंग द सेम थिंग, रेशो tan अल्फा है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. sin अल्फा क्या है, 1 अपॉन रूट 2, cos अल्फा 1 अपॉन रूट 2, तो 1 मिलेगा. tan अल्फा इज 1 मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. देन sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स इनटू sin, तो ये क्या मिलेगा, आइडेंटिटी. रिमेन इज ओनली अल्फा प्लस रूट x मिलेगा. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या है अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ 1 है. तो वी सब्स्टिट्यूट हियर y इज इक्वल टू क्या मिला है, अल्फा प्लस रूट x. तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की tan इनवर्स ऑफ 1. ठीक है, एंड देन वी डिफरेंशिएट दिस. तो tan इनवर्स 1 क्या है, कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. एंड रूट x का क्या आएगा, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x. cos इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x डिवाइडेड बाय 5. तो आउटसाइड टर्म इज cos इनवर्स, तो इनसाइड क्या कन्वर्ट करनी है, cos. ओके, देन हियर मिडल इज माइनस साइन, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos a प्लस बी का. ठीक है, इफ हियर इज प्लस साइन देन मिडल वी गेट माइनस साइन. cos a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b. ठीक है, देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इनसाइड टर्म इन टर्म्स ऑफ cos. देन first we denote given as y is equal to, okay, and then we separate out constant and this cos sin term. Then 3 by 5 into cos term minus 4 by 5 sin 3x term. ठीक है, then what is the expansion of cos a plus b का expansion क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b. Here either you can use alpha plus x or directly you can use a plus b. We know that this. Okay, then cos a cos b sin a sin b. तो फर्स्ट वैल्यू cos a की 3 by 5 एंड cos b की क्या है, cos 3x. sin a की क्या है, 4 by 5 एंड sin b की क्या है, 3x है. ठीक है, देन cos a we denote this as constant 3 by 5 एंड sin b we denote this as 4 by 5. तो ये क्या होगा, y is equal to cos इनवर्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ 3 by 5 क्या पुट करेंगे, cos a एंड 4 by 5 की जगह क्या पुट करेंगे, sin a. ठीक है, तो cos a cos 3x sin a sin 3x. तो ये क्या होगा, cos a प्लस दैट इज a प्लस 3x का फॉर्मूला होगा. ठीक है, तो cos इनवर्स इंटू cos वी नो दैट आइडेंटिटी, बट बिफोर दिस वी फाइंड a. तो a क्या है, we find a that is taking the ratio of sin upon cos. tan a is equal to sin a upon cos a. तो sin a क्या है, 4 by 5, cos a क्या है, 3 by 5. तो ये 5 कैंसिल होगा, 4 by 3. फ्रॉम दैट tan is 4 by 3, तो ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4 by 3. ठीक है, देन cos इनवर्स इंटू cos इज आइडेंटिटी. देन क्या है, a प्लस 3x, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स 4 by 3 प्लस 3x. ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, दिस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0 एंड 3x का क्या मिलेगा, 3. ओके, देन dy by dx इज 3. ओके, नेक्स्ट वन एग्जांपल, cos इनवर्स इंटू the constant into cos term plus constant into sin term. Then outside term is cos inverse, मतलब inside term क्या simplify करनी है in terms of cos. Then here middle is plus sign, then cos into cos plus sin into sin. Okay, then which expansion, that is cos a minus b. What is expansion of cos a minus b, cos a cos b
plus sin A into sin B. Okay, then using this expansion we first simplify this. We denote this given as y is equal to the term, then we separate out constant term, then cos e raised to x into 3 upon root 13 plus sin e raised to x into 2 upon root 13. Okay, then we have used the formula cos A minus B. We denote this 3 by root 13 as cos B term. Okay, and this second 2 by root 13 as sin B term. Then what we get here, if cos A, here cos B, sin A sin B, बट e की जगह क्या है, e raised to x है, तो ये क्या है cos e raised to x into cos B, because this 3 by root 13 we denote cos B. Then next is sin e raised to x into sin B. sin B मतलब this 2 by root 13 की जगह क्या है sin B. Then this is the expansion of cos e raised to x minus b. Then cos a minus b मतलब e raised to x minus b. Then this is the expansion of cos e raised to x minus b. Okay, this one. Then this inside term is the expansion of cos e raised to x minus b. Then what we get, y is equal to cos inverse cos e raised to x minus b. Then this has identity. Then here we have to find determine the value for b. Then tan b is sin b upon cos b. Take the ratio, sin is 2 upon root 13 and cos b is 3 upon root 13. The ratio is 2 by 3. Then tan b is equal to 2 by 3. Then b is tan inverse 2 by 3. Okay, then this cos inverse into cos is identity. Then what we get, y is equal to 1 e raised to x minus b. Then substitute b tan inverse 2 by 3. Then differentiate किया तो दिस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा एंड e raised to x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to x. cosec inverse 10 upon 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x. Then here we denote the given as y is equal to the formula, and then we know the relation between cosec inverse of x is equal to sin inverse of 1 upon x. Okay, then this cosec inverse we write sin inverse 1 upon x, and this has this whole this value is our x. Then when this cosec inverse of x is equal to sin inverse of 1 upon x, matlab we have to take this reciprocal of x, but x term is again a upon b form. Okay, whole this term is our x, but x is a upon b form. Then when we take its reciprocal, then this denominator becomes numerator and this numerator becomes denominator. matlab kya aayega, y is equal to sin inverse of this denominator is numerator matlab this one, and numerator is denominator matlab this one. Then sin inverse, then outside term is sin inverse matlab inside क्या convert करनी है in terms of sin, such that sin inverse into sin becomes identity. Okay, then we have to simplify inside term in terms of sin, but middle is minus sign. if middle is minus sign तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, sin a minus b का, because sin a cos b minus cos a sin b. Okay, by using the formula of sin a minus b, because middle is minus sign. Then we separate out the constant term 6 by 13 6 by 10 into sin 2 raised to x minus 8 by 10 into cos 2 raised to x. Here in terms of sin is there. This second term कौन सी रही, cos, मतलब 6 by 10 is cos term. Okay, and this next is also cos term, तो sin b, this sin b मतलब क्या होगा, 8 by 10. Okay, this sin inverse into 2 raised to x we write in proper way. sin a minus b का फॉर्मूला क्या है, sin a cos b minus cos a sin a. पहले क्या होता है sin term. Okay, then this sin 2 raised to x into cos b minus next क्या है cos a, तो this cos 2 raised to x into sin b 8 by 10. Okay, sin a minus b sin then cos, cos then sin. sin a क्या है this one, but cos b matlab 6 by 10. Okay, then we denote this as 6 by 10, and this next constant term क्या होगी, sin b की होगी, sin b is 8 by 10. then these are sin 2 raised to x into this cos b, cos 2 raised to x into this sin b. Okay, this has sin 2 raised to x cos b, cos 2 raised to x sin b. तो एक इसका एक्सपांशन होगा sin 2 raised to x minus b का होगा. Okay, then this is the expansion of sin 2 raised to x minus tan b क्या मिला 4 by 3, तो b क्या है tan inverse 4 by 3. then when the sin inverse into sin is identity, remain is 2 raised to x minus b, तो y is equal to क्या मिलेगा, 2 raised to x minus b, b की वैल्यू क्या है tan inverse 4 by 3. then डिफरेंशिएट किया तो dy by dx का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 raised to x into log 2, because a raised to x का डेरिवेटिव क्या है, a raised to x into log e. using this formula